सिनेमा का थोड़ा अच्छी फिल्में दिखाते हैं, एक और तरह का सिनेमा दिखाते हैं, एक ऑडियंस देखती है और ये पता लगता है उनको कि ये हर तरह की फिल्में होती हैं, हर तरह का एक्सपीरियंस होता है और एक ऑडियंस तैयार भी होती है अलग तरह के सिनेमा के लिए. I really love it. I think it's fantastic. And मैं अक्सर जाता हूँ इन लोगों के साथ, कभी लखनऊ, कभी आगरा, कभी चंडीगढ़, कभी जयपुर, रांची, हर जगह जहाँ जहाँ जाते हैं मैं I'll always go because I like the idea of एक traveling festival जो है. That's it? हाँ. और सर एक सवाल आपसे बनता है सर, क्योंकि आप हमेशा सोशल मुद्दे नहीं, वो मैं जागरण के ऊपर ही सर जागरण का सवाल ये है कि सर जागरण के ऊपर ही सवाल है कि हर कोई जाग रहा है आज की डेट में और इंडियन आर्मी भी बड़ा समझदार है. इंडियन आर्मी भी जाग चुकी है सर. जो खबर आपको भी मिली होगी सर, उस पर एक रिएक्शन, एक प्रतिक्रिया सर. नहीं देखिए, बुम नीचे प्लीज थोड़ा सा सर, बुम नीचे. एक्सक्यूज मी. जहाँ तक हिंदुस्तान को डिफेंड करने का सवाल है और जहाँ तक आपकी जो टेरिटरी है उस पर अगर कोई हमला बोले तो उसका जवाब देना, मैं और इंडस्ट्री के सारे लोग इसको बहुत ही सही मानते हैं और हम पूरी तरह से सरकार के इस जवाब के साथ हैं. ये तो कोई बात ही नहीं हुई. हम ये चाहते होंगे कि प्यार हो, भाईचारा हो, हम लोग एक साथ बैठें, आर्थिक प्रगति हो, कल्चरल एक्सचेंज हो, लेकिन अगर नहीं होगा और सामने से कुछ प्रहार होगा तो उसको जवाब तो देना ही पड़ेगा, है कि नहीं? ऐसे तो नहीं है. तो फिर कायरता हुई अगर नहीं दिया जवाब. तो अगर जवाब, मैं आर्मी का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन बहुत बहुत सही है अगर आपने कोई स्ट्राइक की है और आपने कोई प्रीएम्प्ट किया है कुछ जो हो सकता था, जो मुमकिन हो सकता था. अगर कोई कैंप है जो यहाँ पे हमला बोलने वाले थे और अगर उनको आपने रोक लिया और आपने पहले ही उन पे धावा बोल दिया तो बहुत सराहना करूँगा. ये देखो फिर see, it's a complicated question, but I think culture is see, I mean, you cannot hold an American actor, for instance, responsible for every action of the American government, right? You cannot. There are a lot of artists who dissent, right? That those artists should also speak against wrongs in their own country is also a valid point. There's a validity that they should also say. Just as we talk of peace, they should also talk of peace, right? So I mean, I think, for example, so many people work with Mishra sahab, right? Who's, I mean, amazing musician. So and so if there is an actor who or director wants to cast who suits his part, and if he is culturally right and suits the part, I think it'd be good if these kind of exchanges stay on. It's also very good that our films release in the neighboring country, which is specifically Pakistan, and in Sri Lanka, and in Philippines, and in Korea, and in China. For example, the business of PK in China is huge. So it's opening up a whole market and a point of view of India also. What is, I mean, the Hindi film industry and the Indian film industry is a cultural ambassador. So it presents the genius, the cultural diversity, the ability, the stories of India. And therefore, in a sense, like the American cinema promotes a lot of American stuff. Therefore, Indians are cultural ambassadors, and I think it's wonderful that our films are shown everywhere. And I think if that conversation continues, it's good, right? That said, I mean, if there is attacks, we are all with the Indian government, you know. There's no, I mean, there's no question. It's not even a, I mean, so a lot of people will say, why don't you speak? The fact we are Indian, we speak. We are always
the industry has always stood by, and we are always. But I mean, we personally, an artist's desire is for peace. That's your desire as an artist. An artist's desire is for understanding, right? An artist's desire is for a resolution of conflict, right? So that is an artist's desire, but if there are, it's not as simple as that, and if there's a problem, then, you are of course with the government, and to defend our land is absolutely of primary importance.